तो हेलो, आज हम प्रोसेस सीखेंगे भेलपूरी कैसे बनाते हैं और हर चीज़ का प्रोसेस इंग्लिश में भी सीखेंगे। तो आप रेडी हैं? आज एक नई चीज़ है, बहुत अलग बात है। इस चैनल पर वैसे तो हमेशा इंग्लिश के नोट्स बनते हैं, इंग्लिश की अलग अलग नोट्स या फिर के नोट्स और इंग्लिश शॉर्ट्स, लेकिन आज हम भेलपूरी बना रहे हैं, थोड़ा अलग कर रहे हैं। मेरी मासी अच्छी बनाती है, इसलिए आज मेरा खाने का मन कर गया। चलो तो अब हम देखेंगे। अभी इसने बहुत फ्लैटरी कर दी है, ठीक है। कोई बात नहीं। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस भेलपूरी टुडे. ओके, सो यस, we will learn some English terms and we will learn the process in English today. Okay, this bhelpuri process. So first of all, Veda, tell me, you know, right, what is this? Yes. What is this? Onion. And what is you are chopping the onion. Okay, I'm chopping the onions. I'm cutting the onions, right? I'm finely cutting the. Finely means बहुत sharp and प्यारा छोटा, है ना? तो chopping means काटना. Okay. And what is this, Veda? What? This white board. Chopping board. And say it like what? Say what? What? Very good. Okay. What nahi, simple nahi, what? Okay. Now you know already what is this, right? Tomato. Focus here. Yeah, tomato are ready, and also we are putting potato also. Okay. I don't think that make a good taste. No, boiled आलू, जो boiled आलू होता है ना, वो हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है, तो इन्हांस करता है टेस्ट को, भेलपूरी में तो स्पेशली. ओके. और लेकिन अगर फ्राई पोटैटो होता है तो वो कम हेल्दी होता है, लेकिन ये बॉइल्ड है इसलिए ये हेल्दी है. ओके. चलो, Chop this. ओके. It is like makhan. It's texture. Okay, you are comparing its texture, Uh, right? It is when you are chopping, it is feeling like a makhan. Okay, so it's very smooth and soft. That's what you want to say, right? Yes. That the chopping is very smooth. It's not like onions, right? Taking too much effort on onions, right? It's very smooth, Yes. soft, and easy. Like a banana chopping. Easy. Okay. Now let's add some aloo bhujia, namkeen here. Okay. Aloo bhujia has very crispy taste, so that is why adding aloo bhujia in the bhelpuri is very important. Now bhelpuri time. What are these, Veda? I don't know. This is rice flake, poha. Okay. A good smell is going in my nose. Okay. Colorful लग रहा है? Yes. Nice, right? And Potato. आप इसको. First time I am eating with potatoes. No. You have already tried all this. You have already eaten in the past. You don't remember. I have done this. मैंने आपको आग डाल के काफी टाइम भेलपूरी खाया. मेरी आपको पता नहीं चलता क्योंकि तब आप मोबाइल देख रहे होते हो. नहीं. अब देखो, ये एक रेड चिली पाउडर मिक्स लेकिन हेल्दी मसाला है, घर का बना हुआ. सो आई एम पुटिंग इट टू मेक इट लिटिल स्पाइसी. ओके. इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा भी है, कड़ी पत्ता भी है. देखो कितना खुशबू आ रहा है. कड़ी पत्ता भी है, राइट? तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी मसाला, A good smell. राइट? I think I can eat this without Okay. mixing. या. सो नाउ one last type of namkeen. You will cook it, heat it or not? If you say, then otherwise it is very tasty as it is also actually. Okay. Okay, no need of heating it. गरम करने की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही आपको क्रिस्पी लगेगा. अगर नमकीन सीली हो ना, गीली हो. Siness. Okay, chili flakes also you want? Yes. Okay, let me add some chili flakes and oregano. Where are those packets? I am thinking that I can also become a chili flake after eating it. तो फिर नहीं डालते, ज़्यादा तीखा नहीं करते. Put some put. Okay, थोड़ा डालूं? Yes. Okay, चलो. 1 second. ये तो हो गया सीजनिंग, oregano seasoning, oregano. Does not matter so much. A little, right? Yes. Chili flakes. Lemon is very important. Yes, I also love lemon. Okay. It make a good taste. Yeah. So lemon is very important. क्यों? क्योंकि विटामिन सी होता है भेलपूरी के ऊपर जब खाते हैं तो फ्लेवर्स भी अच्छा होता है और गले को बहुत राहत पहुंचाता है. What a खट्टा खट्टा taste. Sour taste, vitamin C and all the health benefits. Okay. गले की नसों में बड़ा, और पैलेट, आपकी टंग पैलेट को बहुत. If we eat lemon by not adding in anything and tasting it, we feel very sour. Okay. So now we are squeezing in the bhelpuri. Now you will not feel that sour, right?
You will feel a very good taste. I want to क्योंकि अकेला eat. नींबू आपको नहीं मिल रहा, जैसे आप पहले एक्सप्लेन कर रहे I थे. want to eat it fastly. Okay. Then this is ready and stop the video and enjoy your bhel puri.